Very good morning to one and all present over here. Welcome you all today's English session. So today, dear kids, we are going to start with a new chapter in literature, that is chapter number 6, A Life for Others. And this chapter is based on green blessings, and this story, beautiful story, is based on environment. Okay, let's start. Let's first of all see the warm up exercise. In the warm up exercise, how do trees help us tick the correct answers? In this, we have to tick where the trees are useful. Okay, so the first one is trees clean the air by providing oxygen. Is this true? Right. Okay, trees spoil the beauty of a place, right? No, trees never spoil the beauty of the place, but trees are always beauty of a place. Number 3. Trees help in controlling flood. Yes, it's true. Trees provide food. Yes, it's true. We get so many fruits and vegetables from the trees and plants. Wood from trees is used to build houses, ships, bridges, and make furniture. Is this true? Yes. Trees cause air and water pollution? No, never. Trees provide shelter to animals? Yes, always. And trees should be cut to build factories and roads? No, dear kids, trees should not be cut because trees are very useful to us. Okay, my dear kids, let's start with the story. This is a story about five cousins and their visit, and they are going to visit to their grandfather's house in a village during summer vacation. Okay, let's start with the story. In this chapter, how the narrator learned the true values of trees and how planting trees helps to make our surrounding better. इस स्टोरी में नरेटर को क्या सीखने को मिला? द वैल्यूज ऑफ ट्रीज की क्या वैल्यू है, और प्लांटेशन के बाद सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट में कितना चेंज आता है, ये नरेटर ने खुद फील किया है. सो नरेटर इज गोइंग टू say something about it. Okay, let's start. Every summer, all cousins Manu, Mrina, Mithili, Vignesh and I would go to a village to spend the holidays with our grandparents. Our grandfather owned a number of farms where would grow wheat and sugarcane. One summer we went there for a long holiday. We found our grandparents eagerly waiting for us. We rushed and hugged them. वो हर साल मतलब वैकेशन में जाते थे, लेकिन इस बार समर वैकेशन में दे प्लान फॉर लॉन्ग हॉलीडेज, एंड व्हेन दे वेंट दे वर वेरी हैप्पी टू meet with their grandparents. During this visit, they saw their grandfather planting mango and neem saplings around the house. एक दिन क्या हुआ, देवर द गार्डनिंग लेनिंग द हाउस वॉज ब्यूटीफुल. हर जगह पे बहुत सारे प्लांटेशंस थे. वन डे उन्होंने क्या देखा कि उसके ग्रैंडफादर मैंगो और नीम की सैपलिंग मीन्स प्लांटेशन कर रहे थे. सैपलिंग मीन्स यू कैन से बीज. ओके, सो he said when the saplings grow into trees, they will provide shade for people to sit and rest. Birds, squirrels and other small animals will be able to make their homes in these trees. ओके, ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये बड़ा होने के बाद सबको शेड देगा, बर्ड्स को हाउस मिलेगा और स्मॉल एनिमल्स के होम्स बनेंगे. बट they all cousins were asking that grandfather, these trees will take a long time to grow. Of what use will they be you?
सब कजिन्स पूछ रहे हैं अपने ग्रैंडफादर को कि ग्रैंडफादर ये तो बहुत टाइम लेगा, राइट, इन्होंने तो बीज रोपा है तो ट्री होने में बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने हंस के इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया, डेट आई एम नॉट प्लांटिंग दिस ट्री फॉर माई सेल्फ, they will help everyone in the village, even if I do not live that long, others will enjoy the fruits of my labor। उन्होंने बोला कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरों के लिए मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ। जो भी जिसको खाना है वो खाएगा और मुझे मेरे काम को याद रखेगा। That's a very beautiful answers. So children really understood. So many years ago again, after grandfather was no more, मतलब बहुत सालों के बाद वो लोग बच्चे मतलब चिल्ड्रन कजिन फिर से वहाँ गाँव जाते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडफादर तब नहीं थे। Grandfather was no more. They found the mango trees had planted that summer filled with juicy mangoes. The neem tree had spread their branches far and wide. उन्होंने देखा कि बहुत सारे मैंगोज थे, ब्यूटीफुल मैंगोज थे, जूसी मैंगोज, और वहाँ पे बहुत सारे नीम ट्री थे जो राह चलते मतलब जो चलते हैं, जो थक जाते उनको शेड दे रहे थे। Many years later, the narrator experienced the truth of his grandfather's words when the children saw the changes in the environment of the village brought about by the many trees his grandfather had planted. नरेटर ने खुद देखा कि वहाँ पे स्क्विरल्स इधर उधर घूम रहे थे, बर्ड्स ने अपना घर बना दिया था, मंकीज वर एंजॉइंग, और उन्होंने सच में ये विलेज में बहुत सारा एनवायरमेंट चेंजेस देखा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यू शुड नॉट कट द ट्रीज बट यू शुड प्लांट इवन अ सिंगल plant. You can grow a single plant at your home. Okay, I hope you understood the video and enjoyed the story. Have a nice day. Bye, take care.